Okay. Let me know if my screen is visible. Can you see my screen? Yes, can you see my screen? No. Uh, okay. Give it a minute. Yes, ma'am. Now it's visible. Okay. Screen should be visible now. Yes. Yeah. Okay. 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 Good. Right. Okay. So let's continue with JavaScript. Uh, the elements from HTML to Java. HTML के elements JavaScript में हम कर सकते हैं using document select options. Get element by class name. Ma'am. The options are can select the Ma'am, your voice is breaking, and screen is हमको visible. हाँ yes Ma'am, your voice is breaking, is and not visible. no, ma'am, its voice is not clear, and also screen is not visible. Okay, let me check. Yeah, ma'am, it's visible. But ma'am, there is some problem. It's again not very visible, and your voice is also breaking in between. Okay, let me refresh. Okay, now it's visible and my voice is okay. Yes, ma'am. ठीक है चलो.
हाँ, तो आई वाज सेइंग कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स हाउ वी कैन सिलेक्ट इट इनटू जावास्क्रिप्ट. ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस. ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, एक्सेट्रा. ठीक है. सो आईडी इज अ यूनिक वैल्यू. आईडी एक ही होता है पूरे एचटीएमएल कोड में, एक एलिमेंट को एक ही आईडी रहेगा. सो व्हेन वी सिलेक्ट बाय आईडी, देर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स. एक ही एलिमेंट मिलने वाला है जिसको ये आईडी मैच होगा. ओके. बट क्लास नेम और टैग नेम के बारे में ऐसे नहीं है. राइट. देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ बटन टैग. देर कैन बी 10-20 एलिमेंट्स ऑफ द सेम क्लास. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, I have 2-3 paragraphs. Para 1, para 2, and para 3. Okay. And ये सारे paragraph tags को I will give a class para, para for example. ठीक है. Now I want to select these paragraphs into JavaScript. तो not necessary कि मैं ये सारे p tags को अलग अलग ID दे दूँ. ठीक है. You don't need to give different unique IDs for all the elements for them to be able to be selected in JavaScript. ठीक है. तो अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, इफ आई वांट टू गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. ठीक है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट पैराग्राफ्स इज इक्वल टू document dot get. See, you can see the difference. Get element by ID, and here they have written get elements by class name. Singular and plural. Get element by ID, and this is get elements by class name. इसका मतलब क्लास नेम इफ यू आर राइटिंग ओवर हियर, तो ये क्लास के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो यू विल गेट मल्टीपल सिलेक्शंस ओवर हियर. ठीक है. एंड एक से ज्यादा वैल्यू जब हम लोग एक वेरिएबल में सेव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यस, इन द चैट बॉक्स. व्हेन वी सिलेक्ट मोर देन वन, sorry, when we store more than one value in a paragraph, in a variable, what do we call this variable as? क्या बन जाता है ये हमने देखा. Yes, anyone in the chat box? When we store more than one element, more than one value in a variable, what is that variable called? Can you guess? Come on, yes or no in the chat box. Can you guess? Array. When we want to store multiple values in one variable, it is called as array. So yes, whenever we select the elements using class name, and they all, so basically यहाँ पे para नाम के 3 classes है. 3 elements को we have the same class name. So which one will get selected? All 3. तो 3 एलिमेंट्स आपको एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं. इसका मतलब क्या है? दैट पैराग्राफ विल टर्न इनटू एन array. This variable, this paras variable will turn into an array. Okay, let's open this in our browser. We'll have to do console
डॉट लॉग पैराज। तो ये जो पैराज है जिसमें हमने इस जिसके आगे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम पैरा। तो पैरा नाम के जितने भी एलिमेंट्स है जिसको क्लास नेम पैरा है वैसे जितने भी एलिमेंट्स है दैट विल गेट सेव्ड इन दिस वेरिएबल। सी HTML collection of 3, दिस इज एन एरे। आपका नॉर्मल एरे भी ऐसे ही दिखता है, ये भी ऐसे ही दिख रहा है। सो बेसिकली हमको एक एरे मिलेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज दिस पैरा 1, दूसरा इज दिस पैरा 2 एंड तीसरा इज पैरा 3। तो all the three elements जिसको क्लास पैरा है those are getting selected over here। इसमें से आपको अगर फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो लाइक एरे कार्स ऑफ 3, आप उसका इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। तो अगर आपको इनमें से सब इन 3 पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है सो यू कैन राइट इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट पैराज ऑफ 0, मतलब ये पैरा 1 सी ये सिलेक्ट हो गया। नाउ यू विल नॉट गेट एन एरे, वो एरे के अंदर का पहला वैल्यू हमने सिलेक्ट किया है विच इज पैरा 1। ओके, थर्ड सिलेक्ट करना है तो पैराज ऑफ 2, तो ये पैरा 3 सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, this is how we use get elements by class name। ओके, ऑलराइट। सो एरेज, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एरेज जो हमने स्टार्ट किया था एंड हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ HTML into JavaScript। गिव मी अ मिनट। यस, ओके, ऑलराइट। सो हम्म so till now, whatever we have seen, array, how to select HTML elements into JavaScript, etc. Yeah, पूरे JavaScript में. Anyone has any doubt? If you have any doubt, we can solve that doubt first and then move on to the next topics. Any doubt in the chat box? Yes or no? If you have any doubt, you can unmute and ask. Chalo. Anyone? Any doubt? Did you practice? Any doubt? Yes or no? Quickly in the chat box. No doubt. Okay, we'll continue. All right. चल
We have seen arrays. ठीक है. One more important method, for example, of array. ठीक है. That we will see, which is called as the map method. ठीक है. For example, you have this array of cars. We have this array of cars. तो मुझे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो एरे है वो मुझे HTML के ब्राउजर पे प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, और आई वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन सेपरेटली ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको प्रिंट करना है, मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स के पहले मुझे लगाना है आई एम. ठीक है. एंड देन वॉट एवर द नेम ऑफ द कार इज, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आएगा आई एम सेल्टॉस. ठीक है. फिर सेकेंड टाइम वो लिखेगा आई एम BMW, देन इट विल राइट आई एम वोल्वो एक्सेट्रा. So basically what I want to do is I want to perform some specific operations on the elements of the array. तो अभी आप बोलोगे कि ठीक है, सिंपल है, यू कैन राइट लाइक दिस, console.log आई एम, एंड देन उसके आगे आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट ले लो. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया आई एम सेल्टॉस. Right now there are only 4 values in the array, but whenever you move on, हमको जनरली सोचना है. कहीं कोई सिचुएशन में यहाँ पे 400 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. Will you write I am console.log and cars of 0, cars of 1, cars of 2 till 399? 400 बार, 400 times will you write this line? No. ठीक है. इसके लिए हम लोग एक तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं. इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैड सीन वी कैन यूज फॉर हाउ वी कैन यूज फॉर लूप. इस केस में फॉर लूप भी काम आ सकता है, यस और नो. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आई एम, एंड इसके आगे यू हैव टू सिलेक्ट द एलिमेंट्स इन द एरे वन बाय वन. सबसे पहले कार्स ऑफ 0 सिलेक्ट करना है, फिर कार्स ऑफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे. Anyone has any idea how to write this in for loop? How to achieve this in for loop? कैसे for loop लिख सकते हैं हम इसको? For yes, anyone? इसके लिए कोई मुझे for loop सजेस्ट कर सकता है? How we can write for loop for this case? चलो, yes or no in the chat box. You can write yes, no, or you can write confused. If you know the answer, you can directly write the answer. Okay. हमने नॉर्मल फॉर लूप में क्या किया, when we were trying to study for loop, we were trying to print the numbers from 1 to 100. करेक्ट. तो आपको यहाँ पे भी 1 to 100 नंबर ही चाहिए, और 1 to जितना भी आपका एरे का लेंथ हो. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 to 4 नंबर आपको चाहिए यहाँ पे. बस इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट 1 to 4 वी वांट टू राइट इट इन द इंडेक्स ऑफ द एरे. कार्स ऑफ, इसके अंदर का जो वो नंबर है वहां पे आपको लिखना है इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द नंबर. सिंपल. सो फॉर आई इज इक्वल ऑलवेज एरे स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0. कहाँ तक जाना चाहिए आपका लूप? जितना आपका एरे है, एरे एलिमेंट तक वो लूप घूमना चाहिए, एंड इट शुड प्रिंट द लास्ट एलिमेंट आल्सो. सो
the length of your array is 4, but एंड आई प्लस प्लस मतलब 1 2 3 4 ऐसे एक एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास एरे में 4 है, 4 है. तो ये लास्ट का इंडेक्स क्या रहेगा? लास्ट वैल्यू जो है इसका इंडेक्स क्या है? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ पोलो? कैन एनीवन? हाउ कैन आई एक्सेस पोलो? 3. करेक्ट. तो यहाँ पे 4 अगर हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? एरे के बाहर चला जाएगा. इंडेक्स 0 से चालू किया हमने, 0 पे सेल्टॉस है, 1 पे बीएमडब्ल्यू है, 2 पे वोल्वो है, 3 पे पोलो है. खत्म, हमारा एरे खत्म. लेकिन ये हमारा लूप कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है. फोर्थ, इज देयर एनी फोर्थ एलिमेंट? नो. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. सो इधर यू कैन राइट लेस देन इक्वल टू 3 और यू कैन ओनली राइट लेस देन 4. इक्वल टू नहीं दिया तो वो लेस देन 4 क्या होता है? 3. 3 पे वो लूप खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आप बोल रहे हो 0 से चालू करो, के पहले लूप खत्म करो, लेस देन 4 खत्म करो लूप, एंड आई प्लस प्लस. ओके फाइन, दिस इज डन. ठीक है, नाउ यू विल डू console डॉट लॉग. क्या प्रिंट करना है? आई एम. ठीक है, इसके आगे आई वॉन्ट टू राइट cars of. नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 मतलब मैन्युअली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 आई वांट टू यूज द फॉर लूप. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? व्हाट इज द वेरिएबल दैट काउंट्स और कीप्स अ ट्रैक ऑफ द लूप? यहाँ पे कार्स ऑफ क्या आएगा? आई. परफेक्ट, आई. ओके, सी. सो just using a small loop, just using 3 lines, we have printed this array on the screen. एंड हर एलिमेंट को मुझे मॉडिफाई करना है थोड़ा थोड़ा सा. मतलब हर एलिमेंट के पहले मैंने आई एम लिखा. आई एम सेल्टॉस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस. ठीक है, अभी चलो मान लो आई इंक्रीज्ड वन मोर कार इन द एरे. ठीक है, एक और कार मैंने यहाँ पे ऐड कर ली. व्हाट शुड आई ऐड ओवर हियर? Which car? Come on, just name any car in the chat box which I can add over here. Yes, one model of the car. चलो I-20. Okay, I have added I-20 over here. Will it be printed? No, still it is पोलो तक ही जा रहा है. क्यों पोलो तक जा रहा है? क्योंकि हमारा for loop is only covering 4 elements and now हमारे पास एक 5th एलिमेंट है. इस केस में क्या करेंगे? बार बार आपने कोई भी डेटा अगर लूप एरे में ऐड किया तो आप फॉर लूप ढूंढ के इसका इंडेक्स बढ़ाओगे. अब I-20 भी आ गया. नो, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नंबर डायरेक्टली, यू कैन राइट cars डॉट लेंथ -1. मतलब मेरे एरे एरे का जितना भी लेंथ है -1 मतलब उसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है. अभी मेरा एरे का लेंथ क्या है? 5. 1 2 3 4 5. द लेंथ ऑफ माई एरे इज 5 ओवर हियर. लास्ट I-20 का इंडेक्स क्या आएगा? 4. सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि मेरा फॉर लूप कहाँ तक जाना चाहिए? मेरे एरे की जितनी भी लेंथ है उसका -1, ये इंडेक्स तक मेरा फॉर लूप चलना चाहिए. नाउ इट हैज इंक्लूडेड -1 नहीं. ओके, अच्छा 0 से चालू कर रहे हैं ना हम लोग. ओके ओके, सॉरी. यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर
एरे कहाँ गया, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। चलो लेट्स प्रिंट जीरो वन टू थ्री फोर इज इक्वल टू नहीं लिखा है ना यहाँ पे, फोर कार्स इक्वल टू, तो यहाँ को write I less than, then you will write cars dot length. Breaking, still breaking. Okay, perfect. Can I continue? You can hear me. Okay. ठीक है. So this is one method. Okay. Second जो मैंने बोला map method. Okay. This is using for loop. Now we will see using map. So map is a specialized method for arrays. ठीक है. ऐसे ही इफ यू वांट टू लूप ओवर द एरे, एरे के एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके आपको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, देन वी यूज द मैप मेथड. लेट मी शो यू द सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स है एरे नेम डॉट मैप, राउंड ब्रैकेट्स जिसको फंक्शंस बोलते हैं. वी हैव नॉट कवर्ड फंक्शंस येट, बट आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर नाउ. बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे. ओके, दिस मैप इज अ फंक्शन. ओके, एरे नेम डॉट मैप, देन उसके अंदर देर आर a callback function. This is called a callback function. A function inside a function is called as a callback function. Just that much, that's all you need to know right now. We will go over this in detail later. ठीक है. And here inside this you can write whatever you want to write, कि आपको वो specific element के ऊपर क्या operations perform करने हैं. But I think for your level right now this might be confusing, क्योंकि we have not seen functions and everything still. So I'll keep this for later. I'll show you how to add the elements in the array. Okay, अभी ये मेरे पास एक array है for example. Okay, and I want to add a new fruit into my array. So how you can do is fruits dot push. Push matlab adding a new element into your array. Fruits dot push an apple for example. Okay, and if you do console dot log fruits. एप्पल, बनाना, चीकू, पाइनएप्पल. ठीक है, एक और फ्रूट आपको ऐड करना है. आप वंस मोर यू कैन डू fruits dot push
बेरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड इसके बाद आपने वापस अगर इसको console डॉट लॉग किया तो this berry will be added to the list. First there were four elements, now there are five elements because I have added berry. Okay, so आप push के through जो भी element add करते हो array में, always it will be added at the end. array के end में जाके वो add हो जाएगा. If you want to delete the elements from the arrays one by one, okay. If you want to remove the elements from the array one by one, so आप क्या कर सकते हो? Fruits dot pop. That's it. आपको इसके अंदर कुछ एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज पॉप मेथड क्या करता है? सी, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन array. रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट. सिर्फ आपने पॉप दिया तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि एरे का जो भी लास्ट एलिमेंट है that it will remove from the array. Now if you can see, pehle there were four elements, then I've added berry of yes, then I had added berry, but then pop karne ke baad that berry has been deleted and now there are these fruits left. Pop matlab it will remove the last element of the array. Okay, chalo. Pop, push, this much is clear. Map method we will see later. Okay, that will confuse you right now. Yes, this much is clear. Any doubt till here? Yes, in the chat box. Clear, not clear? Okay. ठीक है. So we'll now start with functions in JavaScript. Do you have any idea what is a function in JavaScript? Anything you might be knowing about functions? Anyone wants to answer in the chat? कुछ भी आपको आइडिया है, गेस करना है, what are functions in JavaScript? Yes. चलो. What are functions in JavaScript?
फॉर एग्जाम्पल अभी लूप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? देर इज सम ब्लॉक ऑफ कोड दैट वी वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है, लेकिन उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होता है एंड देर इज सम लिमिट. You can repeat the loop for 10 time, 50 time, 100 time, but you cannot do it for infinite time. Correct? Functions in JavaScript, what you can do is you can write a block of code. ठीक है, चलो let me explain it to you with a diagram.
Hi everyone. There is an internet problem, so I've joined using my phone. I dropped out and I was trying to rejoin. Am I audible right now?